तो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ वर्किंग मटेरियल. ओके, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी? तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है पहले हम ये देखेंगे. तो ये एक साइंस ऑफ वर्किंग मटेरियल एट द नैनो स्केल 1 से 100 के बीच में. ठीक है, 1 से 100 के बीच में, बिलियन ऑफ अ मीटर. एट दिस लेवल मैटर बिहेव्स डिफरेंटली. ठीक है, और ये जो 1 से 100 के बीच में होता है ना, तो यहाँ पे कोई भी लॉ ऑफ फिजिक्स का अप्लाई नहीं होता है, और यहाँ पे जो भी मैटर है ना वो बहुत डिफरेंट वे में बिहेव करता है, गिविंग राइज टू न्यू स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. एंड ऑल्सो इट गिव्स राइज टू व्हाट? स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. न्यू स्ट्रेंथ, new reactivity and new conductivity. Famous quote you can just be adding in order to enrich your answer. Value addition is of course very important. So it can be nanotechnology will lead to next industrial revolution. Mihail Rocco. ठीक है, Rocco Mihail Rocco that nanotechnology can lead to fourth industrial revolution. Nanotechnology can lead to what? Nanotechnology can lead to fourth industrial revolution. Nanotechnology can lead to fourth industrial revolution. Nanotechnology can lead to fourth industrial revolution. Nanotechnology can lead to what? Fourth industrial revolution. ठीक है, तो फेमस कोट नैनो टेक्नोलॉजी विल बी व्हाट? नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. मिहाइल रोको. So the famous quote can be added, and if you are going to add that, it will enrich your answer. If you have any other quotes in your mind and you think that that is going to be suitable, you can do that. Okay, but don't make your code by yourself and write wrongly anybody's name, because the one who is sitting there is far more intelligent than you. Always remember. Carbon and its nanotube, nanostructure. Carbon is a magical element because it exists in allotrope, diamond, graphite, fluorescence, charcoal and graphene. So it is a magical element because it exists in the form of allotropes, diamond, graphite, fluorescence, charcoal, graphene. At nanoscale, carbon forms extraordinary structure. At nanoscale, carbon forms what? Extraordinary structure. I'm finding the feet of the parrot is really warm. So what is the temperature of parrot body? See, birds generally have 104 to 107 degree. Carbon is a magic allotrope because it exists in allotrope, diamond, graphite, fluorescence, charcoal and graphene. At nanoscale, carbon forms extraordinary structure. At nanoscale, carbon forms extraordinary structure. At nanoscale, carbon forms extraordinary structure. At nanoscale, carbon forms what? Extraordinary structure. ठीक है, नैनो स्केल में कार्बन क्या फॉर्म करता है? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. कौन से स्केल में? तो नैनो स्केल में कार्बन फॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर. ठीक है, एट नैनो स्केल कार्बन फॉर्म्स व्हाट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स. फ्लोरेसेंस बकी बॉल कैसा होता है? एस करके होता है. आपने देखा है बकी बॉल? ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन हो रहा है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा. इट इज़ स्पेरिकल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम. ओके, नैनो स्केल फ्लोरेसेंस होता है स्पेरिकल, मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स. ठीक है, ये क्या है? ये स्पेरिकल है और ये 60 कार्बन एटम्स का बना हुआ है. 60 कार्बन atoms. This is spherical and it is made up of 60 carbon atoms. Property is strong like steel but it is light and flexible. Steel कितना ज़्यादा strong होता है? तो fluorescence is as strong as steel but it is lighter and flexible. It is lighter and flexible. It is lighter and flexible. Fluorescence, ठीक है, spherical, made of the 16 carbon atoms. Properties strong like steel but lighter, flexible. Lighter and flexible. यूजेस क्या है? ड्रग डिलीवरी, सनस्क्रीन, मॉलिक्यूलर नेटवर्क एंड कॉस्मेटिक्स. प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग लाइक स्टील बट लाइट एंड फ्लेक्सिबल. लाइट एंड फ्लेक्सिबल. लाइट एंड फ्लेक्सिबल. स्ट्रॉन्ग लाइक स्टील, लाइट एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइक स्टील. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है लाइक द स्टील एंड इट इज़ वेरी लाइट एंड फ्लेक्सिबल. इट इज़ वेरी लाइट एंड फ्लेक्सिबल. इट इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक स्टील एंड इट इज़ लाइट एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फ्लोरेसेंस, बकी बॉल, स्पेरिकल, 60 कार्बन एटम, स्ट्रॉन्ग स्टील बट इट इज़ लाइट एंड फ्लेक्सिबल. यूज ड्रग डिलीवरी, सनस्क्रीन में आप देखना, मॉलिक्यूलर नेटवर्क, कॉस्मेटिक्स, ड्रग डिलीवरी में. ठीक है, जो ड्रग्स में जो बॉडी में देना होता है उसमें.
ग्राफीन क्या है? सिंगल लेयर ऑफ शीट ऑफ कार्बन. ग्राफीन सिंगल लेयर शीट ऑफ कार्बन. हट जा बेबी, तोते तोते हटो. See, I have a parrot and sometimes he's very clingy. He just, sits on my hand, and of course sometimes his nail breaks. Of course he's a baby parrot, so he does that. Ignore that, okay. Drug delivery, graphene is what? Single layer sheet of carbon. Okay, 2D hexagonal. 2D hexagonal, single layer sheet of the carbon. 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 Graphene, single layer sheet of the carbon, and it is 2D and hexagonal. 2D and hexagonal. It is what? It is 2D as well as it is hexagonal. Hexagonal. Okay. So it is single layer sheet of carbon. Only a single layer sheet of carbon is there. It is 2D and hexagonal. 2D as well as hexagonal. 2D and hexagonal. So if you're going to study science and tech from here, so you will complete a bit. Okay, a base here we are just going to build a base, because the rest is up to you. You can enrich your answer with your own value addition points, like quotes you are feeling to add, or any current news. So this is your part, but the basics should be taught here, that at least you won't fail. Structure, single layer of sheet carbon, 2D hexagonal. You have to make your answer unique. Use this just like the Constitution of India, but you have to make it unique, and the uniqueness should be as if that it's your answer. Okay, so that uniqueness and originality you have to add to this answer. A structure, graphene is structure, single layer of carbon is there, and 2D hexagonal. Properties is 200 times stronger than steel, excellent conductor and super thin. It is super thin, बहुत ज़्यादा पतला है, 200 into stronger है than the steel. It is a very strong, excellent conductor, and it is super thin. Super thin. Uses कहाँ पे है? DNA, biosensor, चिप्स, बैटरीज, सोलर सेल. DNA, बायोसेंसर्स, चिप्स हो गया, बैटरीज हो गया, सोलर सेल्स हो गया. ठीक है, तो DNA, बायोसेंसर, चिप्स, बैटरीज, सोलर सेल्स. नाउ कार्बन नैनो ट्यूब सिलेंड्रिकल है एंड हॉलो ट्यूब है. कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है, ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द स्टील. ये लाइट है, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर है. इससे कैंसर का जो ड्रग डिलीवरी है ना, बॉडी में जाता है ये, और ये मान लो तुम्हारी बॉडी के सेल्स में जाता है. स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल्स वगैरह में यूज़ होता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन में. नैनो ड्रग डिलीवरी टारगेट ओनली डिजीज्ड सेल. कैंसर, सपोज इफ एनीबडी इज हैविंग कैंसर, सो थ्रू नैनो ड्रग डिलीवरी द सेल विल बी टारगेटेड. लाइक वी हैव लैक्स मिलियंस ऑफ सेल, एंड सपोज दिस सेल इज कैंसरियस. ठीक है, ब्लू वन. ओके, so through nanotechnology only this cell will be targeted, and this cell is going to be removed. Diagnostic, nanotechnology detects the diseases early. See, early detection of disease is very important. Like cancer, if in the early stage you are going to detect the cancer, then a lot of harms you will be able to prevent. Cancer is so curable. It's just like a normal disease when you detect it at an early stage, like especially at the stage 1 or stage 0. Okay, so if you are going to detect that time, it's going to be very easy. So detection of the disease at early stage is very important. For example, HIV is there, and first of all you suffer from HIV, then AIDS. So if you detect it here, you will be able to prevent a lot of problems. Okay, and you will never go here. Okay, so tissue repair, tissue engineering. Okay, of course there are some tissues that are torn up in the body, and nanotechnology helps us to repair the tissues. Diabetic control, nanopad delivers insulin automatically. Nanopad. Tissue repair, nanofiber. Here you have to use diagnostic में nano sensor. In agriculture and food, nano sensor detects bacteria in the food, which is very important. Suppose if there is any bacteria in the food, you eat that, you will of course be suffering from food poisoning. So early detection of the bacteria is important, and this is done by nano sensor. Nano fertilizer increases yields with least pollution. Okay, nano fertilizer also includes what? Increases yields सुना है ना, yields with less pollution. Nano packaging keeps food fresh for a long period of time. Capsules reach only the target plant. ठीक है, जो प्लांट है कोई डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो कैप्सूल सिर्फ उस टारगेट प्लांट में जाएगा. इंडिया IFFCO launched world first nano urea. In electronics, integrated circuits, nano transistor for powerful computers, graphene batteries, flexible screens, powerful computers, integrated circuit. In energy, solar panel. Okay, solar panel में भी ये यूज़ होता है, solar panel. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
फास्ट चार्जिंग लाइट वेट बैटरीज, रिड्यूसेस द फ्यूल कंजप्शन, ठीक है, जो भी फ्यूल कंजप्शन वगैरह होता है तो जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है ये रिड्यूस करता है फ्यूल कंजप्शन को, ठीक है। इन इन्वायरमेंट नैनो मेम्ब्रेन प्यूरिफाइज द वाटर, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, अच्छा पानी पियोगे ना, पॉल्यूशन वगैरह जो भी है वो डिटेक्ट करता है। नैनो मटेरियल रिड्यूसेस वेस्ट, और क्या होता है ये वेस्ट वगैरह जो है ना वो भी वो रिड्यूस करता है। टेक्सटाइल में एंटी फायर, एंटी रिंकल, एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक्स बनता है, जैसे होता है ना आप ऐसे करो जैसे चूर नहीं होगा, ओके दैट इज़, ठीक है, फायर नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट्स, तो ये एक नैनो मॉनिटर करता है ब्रिजेस और रेलवेज को। स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग और लाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट इज क्वांटम डॉट, कंप्यूटर्स इमिट्स कलरफुल लाइट्स। रिस्क एंड चैलेंजेस, ऑफ कोर्स रिस्क एंड चैलेंजेस में हम क्या देखेंगे, नैनो पॉल्यूशन, हार्मफुल वेस्ट जो भी है उसको देखो, नैनो पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स नैनो पॉल्यूशन इज द सम हार्मफुल वेस्ट इज जनरेटेड, and in fact that has been a study, and in that study it was that nano waste sometimes leads to cancer and some deadly diseases, health risk, toxicity due to particle accumulation also there, especially there is a risk of lungs cancer because the particles are very deadly. High cost, nanotechnology is not something that is within the reach of every person, it's very costly. If you're rich, you have a lot of money, nanotechnology will be within your reach, but for a normal farmer, especially farmers of Bihar, okay, who are unaware, uneducated of a lot of technologies, how will you feel for a point that they will be aware of the nanotechnology? It is another level of challenge because the farmers, especially in the states like Bihar, they are unaware of it. Now, how will they use something which is of course very new to them? They have no knowledge of it. Security issues can be used for espionage or nano weapons, okay, like biological weapons used in China. Nanotechnology can also be used as the bioweapon. Policy gaps, India lacks strong regulations, okay, a strong regulation policy has not been introduced. Of course, now government initiative Nano Mission 2007. Nano Mission 2007 led by Professor CNR Rao. CNR Rao, Nano Mission 2007. Focus on R&D, training and infrastructure. Focus on R&D, training, infrastructure. Focus on R&D, training and infrastructure. Achievements, India ranks 3rd in nanotech research paper. ठीक है, अचीवमेंट देखो, नैनो मिशन 2007 में हुआ था, प्रोफेसर सीएन राव ने किया था, फोकस किया था R&D में, ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो नैनो मिशन 2007 में आया था, प्रोफेसर CNR राव ने किया था। इसमें फोकस किस किस चीज़ में था, R&D, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात बोलो, जो ये सैयारा मूवी आया था उसमें अल्जाइमर था, तो उस एक्ट्रेस को कहा जाता है ना कोई वर्ड बोलने के लिए वो हॉस्पिटल जाती है, शी वॉज नॉट एबल टू से, एंड आई वाज सीइंग दैट, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, आई वाज सीइंग दैट ऑन इंस्टाग्राम रील्स, एंड one comment was there which was so relatable that seeing Sanyara movie everybody is feeling that they have Alzheimer. Of course, so don't feel that you have the Alzheimer, you need to learn repetitively. 2007 में CNN राव ने किया था फोकस R&D, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, RTI से याद रखो, RTI, R&D, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, R&D, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अचीवमेंट, नैनो मिशन अचीवमेंट एंड इंस्टीट्यूट, NAI, ठीक है। अचीवमेंट, इंडिया रैंक्स 3rd आफ्टर चाइना एंड USA। RTI, अचीवमेंट एंड इंस्टीट्यूट, फर्स्ट नैनो साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मोहाली में, एंड नैनो पार्क बैंगलोर। नैनो साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मोहाली एंड नैनो पार्क बैंगलोर। बिहार में नैनो यूरिया पायलट प्रोजेक्ट 2023 में आया था इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, एंड इसकी वजह से बेटर क्रॉप यील्ड हो पाया, नैनो यूरिया पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद पटना 2024 में नैनो वाटर फिल्टर आया, क्योंकि उस टाइम कॉलेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कॉलेरा आउटब्रेक को रिड्यूस करने के लिए नैनो वाटर फिल्टर रिड्यूस द कॉलेरा आउटब्रेक। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल्स, नैनो कोटिंग फॉर वाटर रेजिस्टेंस फाइबर। एनर्जी, नैनो सोलर सेल फॉर द रूरल बिहार, एंड स्किल डेवलपमेंट, नैनो हब एंड कोर्सेज इन पटना, so the people would be aware of it. International initiative Nano Science Conference started in 2020 Kolkata. When it started? In 2020 Kolkata. Later in Mumbai 2022. So first it started in Kolkata, then Mumbai, then Goa. तो KMG, ठीक है। तो 2020 कोलकाता, 2020 मुंबई, 2022 गोवा, 2024 गोवा, 2024
Focus on 5M, mechanical, material, machine, manufacturing, manpower. Mechanical, material, machine, manufacturing, manpower. Mechanical, material, machine, manufacturing, and manpower. Nanotechnology is truly the technology of the future, revolutionizing medicine, agriculture, energy, and space. But as Gandhiji said, science without humanity is dangerous. Hence, nanotech must be regulated, eco-friendly, and used responsibly. If harnessed rightly, nanotechnology can make India a global leader in science while solving the problems of food, health, and environment. ठीक है, उसके बाद हम बाद में देखेंगे ये चीज़.